Yes, good morning, all of you. Fine. Any doubts from the previous classes? Any doubts till now? You can ask me. Online students also, if you have any doubts. Any doubts from the previous classes? Just show me your current affair magazine. No doubts? Yes. Sorry? Does it justify the Indian Constitution? Now, yes, it justifies the Indian Constitution because it reflects the philosophy and fundamental principles, yes, on which the Constitution has been framed. Yes, it was in the spirit of forming a sovereign democratic republic that the Indian Constitution makers have enacted this Constitution, and they wished to achieve the ideals of liberty, equality, justice, and fraternity. So, yes, it is very much justified. Was it necessary? Not really. Yes. Yes, and a fundamental principle set, a fundamental value system on the basis of which the constitution has been framed. So, is the summary necessary? Is the synopsis at the end of the class necessary? Not very necessary, but it is for the sake of convenience. It helps you in understanding things a little better. If you have missed out something, you can go back to the synopsis, refer to it. So, that is, but is it necessary? No, not necessary. Yes, so that is the idea, but yes, it of course has a lot of utility. We do not discount on the utility of the preamble. Anything else? Secularism of India. Yes, I think so. There have anyways been doubts about secularism, hai na? Online students also, I think so, they've had doubts about secularism. Now, this does this giving a national holiday on, hai na, on inauguration of the Ram Mandir, tantamount to killing of Indian secularism? See, we'll not get into the details of this right now because we are not equipped to take on the details. Yes, you might understand it, not necessarily that we are all at the same level. Just keep it simple. From what we have understood, we'll try and answer this question. Is Indian government giving a holiday on inauguration of the Ram Mandir, killing of Indian secularism? Without getting into too much detail, we'll say Indian secularism is based on the idea, is the Indian state indifferent to religion? No, it is not indifferent. That is European concept where the state has no relations. Indifferent to religion का मतलब क्या होता है? No relations with religion. Yes, लेकिन यहाँ पे the Indian state says I have an equidistance from all religion. I maintain principled distance. Therefore, India has something known as Hindu Civil Code. Therefore, the Indian Constitution says that India should aim towards uniform civil code. Yes, to rid the religions of certain practices
which are harmful for certain communities, for certain sects within that religion, for certain gender within that religion. Yes, so that is the idea. So if the Indian state has this idea of principled distance, then on the face of it we'll say no, it is not a killing of Indian secularism, without getting too much into politics of it. We are not equipped to handle that question right now, है ना, at this level of preparation. See, was it necessary? Maybe not. Yes, because India is the lengthiest constitution. Yes, it is the most worded constitution, most detailed provision in the constitution, but there we'll study today. There were certain reasons which led to the length of the constitution. And see, length is just, है ना, length एक procedural aspect है ना, वो substantive aspect नहीं है. In terms of the substantive aspect, our constitution fares pretty well. Our constitution has sustained the test of time. It has been, है ना, जो हमने पढ़ा कि substantive provisions, कि the constitution should ensure justice for all sections of the communities. It should be based on national consensus. All communities within the countries should have stake in the constitution. The constitution must try to ensure justice for all. That all our constitution achieves. So yes, length is one of the features we'll say. And अब ये कोई problem भी नहीं बोलेंगे constitution का. That is the nature of Indian constitution, and because of a number of reasons we have the present length that we see in the constitution. आज पढ़ेंगे वो अभी हम, ठीक है? और कुछ बताओ. Yes. I think so. There was a doubt amongst the online students as well about objective resolution. Objective resolution क्या था? Objective resolution was drafted and forwarded by Jawaharlal Nehru. तो जब Constituent Assembly, अगर आज हम सब क्लास में यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, there should be some agenda, there should be some guideline. मुझे पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है, और हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे. हम पॉलिटी की क्लास के लिए मिले हैं, ना कि इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए या ज्योग्राफी की क्लास के लिए. Yes, that is objective resolution. Objective resolution was meant to guide the Constituent Assembly कि हमें देखो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है. अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत तरह के हो सकते हैं. हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, प्रेसिडेंशियल हो सकता है, फेडरल हो सकता है, यूनिटरी हो सकता है, हम सेक्युलर स्टेट हो सकते हैं, या द स्टेट कैन हैव अ रिलीजन. यस, नाउ so the objective resolution told the Constituent Assembly that, see, we have gathered here to frame a constitution, and the consensus that we have up till now is that our constitution should reflect certain objectives, certain ideals. The Indian state should be a sovereign state, it should be a democratic. यहाँ पे हमें कोई autocracy नहीं चाहिए. यहाँ पे हमें state will not have any religion of its own per se. The state will treat all religious communities equally. Yes, and we want to achieve liberty, equality, fraternity, जो भी, ठीक है. तो objective resolution is setting up the objective of the Constituent Assembly. समझ में आ रहा है? It is telling the Constituent Assembly कि आपको कैसा constitution frame करना है, ठीक है. और ये objective resolution का जेनेसिस कहाँ है? एक इंसान में है क्या उसका जेनेसिस? जवाहरलाल नेहरू में है उसका जेनेसिस? नहीं. उस समय तक है ना, एक कंसेंसस डेवलप हो चुका था. वी वर वेजिंग दिस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर ऑलमोस्ट 100 years. 200 साल से हम कॉलोनाइज्ड थे, और 100 साल से वी वर वेजिंग दिस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज आल्सो फॉर्म्ड. तो बिकॉज ऑफ ऑल सच सर्कमस्टांसेस देयर वाज डायलॉग. हमें आइडिया हो चुका था कि इंडियन स्टेट शुड बी अ सेक्युलर स्टेट, हमें डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी है, हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए. कुछ आइडियाज पे हमारे कंसेंसस था. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज दैट. इट वाज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेस्ड ऑन द कंसेंसस व्हिच हैड बीन रीच्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. यस, and it can be based on Indian civilizational values, yeah, the values of the freedom struggle.
ठीक है, समझ में आ गया? फाइन, तो ये है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कम्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन. Preamble is written after the constitution has been completely written to give a summary of the constitution that we have written. In few words, it is trying to give summary of the constitution that we have written. Anything else? Yes. ठीक है, his question is that the constitution says that we, the preamble यहीं से शुरू होता है, we the people of India have enacted, adopted this constitution. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहा कि हम तो सेक्युलर स्टेट बनेंगे, है ना? तो वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, वी विल बिलीव इन इक्वालिटी, नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट. हम इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. ठीक है, ये सबको समझ में आ गया. बट ही इज सेइंग कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में, दे आर बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटीज, एट टाइम्स रिलीजियस आइडेंटिटीज ऑल्सो. तो हाउ कम we are contradicting, we the people of India who have written this constitution are contradicting ourselves? The idea is, see, these are two different things. हमारे constitution क्या कह रहा है कि the state, please understand, the state मतलब the Indian government, the central government, the state government will not discriminate based on religion, based on caste, based on all such things. तो हमारा इंडियन स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. हमारा इंडियन स्टेट अनलाइक फॉर एग्जाम्पल से श्रीलंका या दूसरी देशों में, वहां पे क्या होता है, कुछ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज होती है. ठीक है, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का मतलब क्या है? द स्टेट विल से दैट दे विल ट्राई एंड प्रिविलेज वन कम्युनिटी ओवर द अदर. हम ये इतना ही समझते हैं इसको. ठीक है, क्या करेंगे? दूसरे कुछ देश हैं ऐसे दुनिया में, जैसे कि I've been repeatedly giving the example of श्रीलंका, क्योंकि हमारे, है ना, नियर बाय देश है. तो यहाँ पे क्या है? they give preference to one community. और ये कौन सी कम्युनिटी होती है? अधिकतर मेजॉरिटी. जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी ओवर माइनॉरिटी. Yes, but in case of India, we find that the Indian state, the Indian central government, the state government as such has no such preferential policies. Has no such preferential policies. हमारे यहाँ कोई privilege नहीं है आपको because you are a Hindu, or you belong to a certain community, or you speak certain language. Yes, that is not generally the case. हमारा Indian Constitution recognizes 22 languages. हमारे यहाँ कोई भी एक national language नहीं है, हमारे यहाँ official languages है ना? तो that is the idea. We are not trying to give preference to one over the other based on the fact that they are in majority. They have numerical strength. ठीक है, तो हमारा इंडियन स्टेट तो डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. अब जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी का एम क्या होता है? टू कम इन टू पावर, टू एंश्योर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. लेकिन प्राइमरी एम है टू कम इन टू पावर. अब हाउ डू यू गेट इलेक्टेड? यू गेट इलेक्टेड बाय ड्रॉइंग सम एसोसिएशन विद द पीपल, है ना? तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है? कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज बहुत एंट्रेंच्ड है सोसाइटी में. अब इंडियन स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, लेकिन इंडियन सोसाइटी कैसी है? इंडियन सोसाइटी में द रिलीजियस आइडेंटिटीज आर एंट्रेंच्ड. हम वैसे रिलीजियस लोग हैं, है ना? वी वुड लाइक टू go to our mandirs, our mosques, our churches and pray. Yes, we celebrate our festival. We believe कि हाँ ऐसा करना चाहिए,
these are the rituals to be followed. We are such a society. Yes, तो हमारा religious identity entrenched है, हमारा caste identity is also entrenched to a large extent. तो इस वजह से जब political parties form होती है, they want, है ना, political parties जब form हो रही हैं, they want vote, है ना. तो how do they seek vote? कि I will ensure your welfare. तो अब इंडिया में हमारे यहाँ क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शन इतना नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? if anybody does not understand, and you, online students also, if they do not understand, you can forward me their query. हमारे यहाँ क्लास बेस्ड डिविजन्स नहीं है ज्यादा, है ना. इंडियन सोसाइटी अधिकतर ट्रेडिशनली यहाँ पे रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे ज्यादा डिविजन्स है, या कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी ज्यादा इंट्रेंच्ड है ना. तो दैट इज द रीजन. अब पॉलिटिकल पार्टीज को जब वोट मांगना है तो दे विल से आई विल इंश्योर योर वेलफेयर, बट व्हाट इज योर प्राइमरी आइडेंटिटी? माय कास्ट, माय रिलीजन. सो अकॉर्डिंगली अब कहीं यूएस में उनको वोट मांगना है सपोजिटली, वहां पे कैसी आइडेंटिटी ज्यादा इंट्रेंच्ड है? वर्कर क्लास, द कैपिटलिस्ट क्लास. तो वहां पे क्या, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स. डेमोक्रेट्स आर मोर प्रो लेबर, रिपब्लिकन्स मोर प्रो कैपिटलिस्ट. ऐसे करके होता है ना, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर इन, वैसे ही तो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होंगी और उसी बेसिस पे वो वोट मांगेंगी. तो दैट इज द आइडिया. इंडियन स्टेट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग. So both things hold true. कि while our political parties have been formed on caste-based identities, at times religious identities, but then the Indian state continues to be secular. We believe in equality. We do not believe in discrimination on the basis of race, religion, caste, language. हम इस basis पे Indian state does not discriminate per se. Fine. Anything else? Acha, I had used this word theocratic state, and I think so it became a source of a lot of confusion. Theocratic state क्या है? Secular state आपको समझ में आया? देखिए, अगर theocratic state, अगर मैं बहुत simple भाषा में बोलूं, theocratic state actually is nothing but it comes from this word theocracy. Theocracy मतलब rule of या government of God. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ गॉड. तो दुनिया में बहुत कम स्टेट्स हैं, 6 से 7 ही देश हैं दुनिया में ऐसे विच आर. और अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में अगर थियोक्रेसी को समझा दे, तो थियोक्रेसी को एक समझाने का तरीका ये भी है कि वेयर द गवर्नमेंट, है ना, वेयर द पीपल आर रूल्ड बाय द प्रीस्ट बेस्ड ऑन रिलीजन. जैसे हाँ एंशियंट रोम जैसे कि, या फिर अभी आज के दिन में हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे बिल्कुल करीब है ना, वेरी क्लोज टू अस. वेटिकन सिटी ऑल्सो, है ना. तो ऐसे कुछ ही देश है, जैसे कि वेटिकन सिटी, लेट अस जस्ट कीप 3 एग्जांपल्स, वेटिकन सिटी, अफगानिस्तान एंड ईरान. ठीक है, यही 3 एग्जांपल्स रखेंगे हम अपने लिए थियोक्रेसी के लिए. और थियोक्रेसी मतलब क्या है? द गवर्नमेंट बाय गॉड. अब गॉड तो खुद नीचे नहीं आएंगे, है ना, भगवान तो खुद नहीं आके रूल कर लेंगे. तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? प्रीस्ट है या द सुप्रीम रिलीजियस हेड है. ठीक है, तो उनके यहाँ ये बहुत कम देश है, मैंने कहा ना 6 से 7 देश ही हैं ऐसे. तो उन देशों में क्या होता है कि द गवर्नमेंट इज कंडक्टेड ऑन द नेम ऑफ द गॉड. और गवर्नेंस के लिए क्या करेंगे? वो रिलीजियस टेक्स्ट यूज करेंगे. जैसे अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में द तालिबान रूल्स बेस्ड ऑन शरिया लॉ. सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट. एक है सेक्युलर. सेक्युलर मतलब स्टेट हैज नो रिलीजन. फिर एक है सिंपल, जो हम बोलते हैं नॉन सेक्युलर, जैसे कि पाकिस्तान हमारे करीबी देश है, हम इसका एग्जांपल लेंगे. नॉन सेक्युलर मतलब द स्टेट हैज आइडेंटिफाइड, या है ना, आइडेंटिफाइड या हैज अ
स्टेट रिलीजन, इन्होंने कहा इस्लाम इनका रिलीजन है ना, मतलब इनकी कुछ जो पॉलिसीज होंगी दे विल गिव प्रेफरेंस टू इस्लाम। समझ में आया? सिंपल है। यहां पे स्टेट का कोई रिलेशन नहीं है रिलीजन से, यहां पे स्टेट इज गोइंग टू गिव प्रेफरेंस टू इस्लाम इन केस ऑफ पाकिस्तान, है ना। वो रिलीजन को, क्योंकि उनका एक स्टेट रिलीजन है, अगर एक स्टेट लैंग्वेज होगा तो हम कहेंगे सब कुछ, सारी सारी जो गवर्नमेंट लेवल पे कन्वर्सेशंस है, every government document will be produced in that language. Yes, communication between the government and the people will take place in that language. So yahan pe if they have a state religion, the state is going to give preference to that religion, keeping it very simple. And there is another idea of theocracies, yeah, theocratic state. Fine, where the government is conducted in name of religion, in name of religion. समझ में आ रहा है डिफरेंस? यहां पे द स्टेट इज गिविंग प्रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, लेकिन यहां पे गवर्नमेंट, उसका सोर्स, अगर हम बोले थियोक्रेटिक स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसका सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी क्या है? भगवान है ना, रिलीजन है। वो कहते हैं कि हम तो भगवान के नाम पे, हम तो रिलीजियस टेक्स्ट के बेसिस पे गवर्नेंस कंडक्ट कर रहे हैं, हम इंसानों ने कुछ नहीं कहा है, या भगवान ने कहा है जो कि एक रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है, उसके हिसाब से गवर्नेंस हो रहा है। ठीक है, फाइन। सो वेरी, वील कीप इट सिंपल। थियोक्रेटिक स्टेट, we just know 3 examples: Afghanistan, Vatican City and Iran. That is it. For our purpose more than sufficient. ठीक है? Any confusion? Yes. अब हमने इसमें भी 2 डिस्टिंक्शन करे थे। हमने सेक्युलर स्टेट में कहा इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, और यहाँ पे नेगेटिव सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल कौन है? यूरोप है ना। ऑल द यूरोपियन कंट्रीज जनरली स्पीकिंग दे आर सेक्युलर कंट्रीज, लेकिन नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, और इंडिया के केस में हम कहते ही पॉजिटिव आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन केस ऑफ यूरोप द स्टेट इज इनडिफरेंट, स्टेट इज इनडिफरेंट, उसका कोई रिलेशन नहीं है, इनडिफरेंट टू रिलीजन। बट इन केस ऑफ इंडिया द स्टेट says that we are equidistant, या we maintain principled distance from all religions. We are based in state giving equal respect, सर्वधर्म संभाव, है ना, सर्वधर्म संभाव, इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। यहाँ पे स्टेट का रेस्पेक्ट नॉन रेस्पेक्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। स्टेट हैज नो रिलेशन, रिलेशन होगा तब तो रेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्ट शो करेगा, लेकिन यहाँ पे यूरोप में नो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। फाइन फाइन। नॉट गेटिंग इनटू इट, है ना। अभी हमने अभी तो अपना पार्लियामेंटरी फॉर्म में जुडिशरी का स्कोप नहीं समझा है ना, तो अभी थियोक्रेटिक स्टेट में तो बहुत कंपैरिजन ऑफ हो जाएगा। नॉट गेटिंग इनटू इट, है ना। और हर देश में थोड़ा अलग होता है, और ऑफ कोर्स अगर भगवान के नाम पे सब कुछ हो रहा है तो जुडिशरी का स्कोप रिलेटिवली लिमिटेड हो जाएगा। रिलीजियस टेक्स्ट के बेसिस पर, रिलीजियस टेक्स्ट तो जुडिशरी ने, है ना, तो वी विल नॉट गेट इनटू इट। फाइन फाइन। So this is what it is. Fine. Sources. What are the sources as far as pre-foundation is concerned? The source is NCERT. Primary source in terms of NCERT is the Indian Constitution at work. ये हमारा primary source है जिसके basis पे classes हम conduct करेंगे अधिकतर. Yes. Fine. But for topics like preamble, है ना, what you can do is refer to maybe Lakshmikant. Let me tell you, Lakshmikant as such is a book
which has relevance for prelims. Previously हम वही एक किताब समझते थे पॉलिटी के लिए, it was like the Bible of polity for few years. लेकिन आज के दिन we believe that Lakshmikant is not relevant for mains. It has lost relevance as far as mains is concerned because it is a very factual book. It does not gives you much of analysis. ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में उसका रेलेवेंस फॉर मेंस हैज कम डाउन ड्रास्टिकली. ठीक है, बट लेकिन अभी के लिए आप जैसे प्रियम्बल जो टॉपिक हमने किया उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज आल्सो देयर, बट एज सच यू कैन रेफर टू लक्ष्मीकांत. इट इज अ बेसिक बुक विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आफ्टर आवर डिस्कशन है ना, लगभग सिमिलर डिस्कशन आपको लक्ष्मीकांत में भी मिलेगा. फाइन. टुडेज टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग विथ, यस yes बट ही देखो वो ये है कि इंडिविजुअल भी एक चीज है, स्टेट तो इंडिफरेंट है. लेकिन अब यूके के भी जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, उन्होंने भगवत गीता पे लेके ओथ लिया है. तो the state is indifferent, but as a person he has belief, he is believer in this Hindu text, है ना. तो वो चीज है, तो इंडिविजुअल लेवल पे डिस्क्रिशन है, बट एज सच द स्टेट इज इंडिफरेंट. ठीक है, फाइन फाइन. So anyways, today's topic that we are starting with is the salient features of Indian Constitution. Once again, as far as your source, you can refer to लक्ष्मीकांत. ये स्कैटर्ड मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, कहीं एक है ना, एक जगह नहीं मिलता इसका डिस्कशन. सो फॉर आवर सोर्स, सिंप्लीफाइड सोर्स, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है लक्ष्मीकांत. यू कैन रेफर टू इट. Fine. Fine. So we are starting with the salient features then for today's class. Where do I find the PPT? Fine. USB. It is. And as such, at this level of preparation, I have told the offline students who have come up to me, you should be referring to NCRTs, है ना. उससे ज़्यादा आप लक्ष्मीकांत के भी details में मत जाओ अभी. That would be my suggestion. Anyways, you are going to go for, and you will be taking up the discussion as part of the foundation course as well. So let the discussions happen. It will ease you into reading whichever book the teacher is going to suggest, है ना, लक्ष्मीकांत और आगे जो भी किताब बताते हैं. But as such, right now, limit yourself to NCRTs. As far as polity is concerned, 9, 10, 11, 12 NCRT is going to be more than sufficient. But do take out time to read that book, because the kind of questions that they are asking in prelims these days have just increased the relevance of NCRT. Yes, पिछले 1-2 सालों में जिस तरह से है ना, पिछले या 2-3 सालों में जैसे questions पूछ रहे हैं, the relevance of NCRTs have relatively gone up. So it would be better if you read NCRTs, and I think so that would be. अभी फिर और भी तो subjects पढ़ने हैं आपको, सिर्फ polity तो नहीं करोगे, है ना. Within these 60-70 days you will be covering a number of subjects. So as far as polity is concerned, just limit yourself to NCRT. If you have more time in hand, which you will have, devote that time to newspaper. You would get much greater return, and in terms of what you, and the time that you put in terms of newspaper reading. Newspaper is very, very relevant. Nobody can clear this exam without reading newspapers. Newspaper reading has relevance across subjects.
यस, सो एंटायर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में भी आप कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से हेल्प लोगे, केस स्टडीज का है ना, कुछ करंट चल रहा है तो यू गेट टू नो द व्यू पॉइंट्स, यू अकॉर्डिंगली राइट, यू कम टू नो ऑफ द स्टेक होल्डर्स, है ना जो होते हैं। तो पेपर 4 में भी कहीं ना कहीं रेलेवेंस है, एसए के पेपर में भी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। तो लीविंग योर ऑप्शनल असाइड, अब जो भी ऑप्शनल आप लेते हो इट डिपेंड्स, but otherwise across the GS paper you have a lot of relevance for newspaper and newspaper reading। आज आपने पढ़ना शुरू किया, आज से आपको न्यूज़पेपर नहीं समझ में आएगा। Yes, it will take time. You might understand one section, you might not understand the other. Somebody understands economics better, another person understands polity better, third person might understand international relation better, depending on your aptitude and background. But please be patient. It will take time. Yes, so we have to be patient, we have to show that patience, and please devote time on newspaper reading. Right now you will take a minimum of 2.5 hours, and that is fine reading newspapers. Eventually you will come down to 1.5 hours. ठीक है, एक न्यूज़पेपर जो आपको thoroughly पढ़ना है, you have a choice, the Indian Express or the Hindu, one newspaper you should read thoroughly. और हो सके तो एडिटोरियल्स वगैरह को और डिटेल में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। रेफरिंग टू यूट्यूब वीडियोस विल नॉट सर्व द पर्पस, है ना, ये शॉर्टकट्स नहीं काम आएंगे, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ के नहीं समझ में आता है 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़ के नहीं समझ में आता है 3 बार, 3 बार नहीं तो 4 बार। यस, यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड, सो यू हैव टू डिवोट दैट टाइम। पेन पेपर लेके पढ़ना है न्यूज़पेपर को, लीजरली नहीं पढ़ना है। यस, ऐसे हम बैठ के आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे, वो नहीं करना है। पेन पेपर हाथ में लेके लाइन खींचते हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करते हुए, नंबरिंग करते हुए, जो आपको हेड्स समझ में आ रहे हैं हेड्स आइडेंटिफाई करते हुए न्यूज़पेपर पढ़ना है। राइट नाउ यू कैन नॉट, है ना, अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आंगनवाड़ी हमने कोई स्कीम्स ही नहीं पढ़ी हैं, तो है ना आप नहीं रिलेट कर पाओगे। ये कुछ स्कीम्स के रिलेटेड है, गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड, आंगनवाड़ी वर्कर्स कम इनटू सीन, ठीक है, तो ये हम बाद में ही रिलेट कर पाएंगे। लेकिन इफ यू आर अवेयर दैट व्हेन द टाइम प्रेजेंट्स, यू नो कि हाँ हाँ दिस इज व्हाट आई नो, आई कैन रिलेट टू इट बेटर, बट एट दिस स्टेज नहीं। पेन एंड कॉपी मतलब पेन पेपर लेके आपको पहले तो न्यूज़पेपर में अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है और उसी पे मार्किंग्स करते जाना है। इफ यू हैव टाइम यू कैन राइट, है ना, जो एडिटोरियल आप कुछ नोट्स भी लिख सकते हो, है ना। और अगर अभी आपको समझने में ही दिक्कतें हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो नो नीड टू मेक नोट्स ऑल्सो, यू हैव जस्ट स्टार्टेड द क्लास, एक्चुअली यू आर नॉट देयर ना रेडी टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, बट you have to sit properly and marking it on the newspaper, numbering it on the newspaper, trying to identify heads on the newspaper itself. You have to read the newspaper. लिख सकते हो बिल्कुल, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देयर इज नो हार्म। और है ना, प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मत लिखना, मेंस के हिसाब से लिखते हैं, तो अभी देख लो आप जितना लिख सको उतना ठीक है। दिस इज नॉट the, I think so, wait, I'll have to, I don't think so I've shared the right, we have spent quite an yes. Fine, I've sent it to you, please get it uploaded. Fine, we'll start with the class then, till the time the PPT is getting uploaded.
Fine. Before we discuss the salient features, we'll also discuss the structure of the Constitution. What is the structure of the Constitution? See, the structure of the Constitution, if we were to talk of the structure, see, if supposedly if this were to be the Constitution, in the first page of the Constitution, what would you find? The preamble. The first page would be the preamble would have been mentioned, and after the preamble you will find that the Constitution has been divided into parts, articles and schedules. Yes, it has been divided into parts, articles and schedules. Now parts are, what are the parts? Parts refer to substantive portions, yeah, substantive, let's keep it as substantive portions of the Constitution. And for example, if we were to look at this book that you have, we can say that the substantive portion, part 1 is about polity and governance, part 2 is international relation, part 3 is economics. These are the substantive parts in which the Constitution of India has been divided. Now what are articles? They are specific provisions mentioned in the Constitution. Now articles which belong to the same idea. अगर पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो सब टॉपिक्स हैं वो सारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंडर कैटेगराइज्ड है, अंडर है ना, तो यू फाइंड दैट फॉर एग्जांपल part 2 of the Indian Constitution is about citizenship. एक सेकंड भैया. Yes, it is about citizenship. So जो भी articles हैं which deal with citizenship, which would be clubbed under part 2 of the Constitution. Fine. So that is the idea. The Constitution, for the ease of reading, randomly अगर सिर्फ articles लिखे होते किसी को कुछ नहीं समझ में आता. For the purpose of structuralization, the Constitution has been divided into parts. So for example, part 1 of the Constitution deals with union and territories, part 2 with citizenship, part 3 with fundamental rights, part 4 with DPSP, and ऐसे करके you have parts. Part 15 with elections, and within these parts, the detailed provisions within these parts are mentioned through articles. So articles dealing with union and territory will be under part 1, with citizenship under part 2, and with fundamental rights under part 3. Yes, so that is the idea. When that is how you will find the structuring of the Constitution. Apart from it, there is something also known as the schedules. What are these schedules that are mentioned under the Constitution? These are extra information which is to be given with respect to a certain part or with respect to certain articles. ठीक है, तो अगर आपको कोई extra information देनी है, for example, we have already mentioned that as far as article 1, Article 1 of the Indian Constitution is concerned, Article 1 of the Indian Constitution reads, India, that is Bharat, will be, is union of states. Yes. Now you find that it is telling us that yes, India, that is Bharat, is a union of states. It comprises states. But which are the states which it comprises of? What are the territories within each state? When were these states formed? Have their boundaries been altered? All that detail also we want.
है ना. सिर्फ ये पता होना कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इज इनसफिशिएंट. वी नीड डिटेल्ड, है ना, डिटेल्स दैट कौन से स्टेट्स हैं, उनका क्या एरिया है, कब वो फॉर्म हुए, and that detailing is provided under schedule 1. It will tell us the states, which are the states, their areas, when were they formed, if their borders have been altered, changed since their formation. जो भी है ये सारा डिटेल हमें शेड्यूल 1 में मिल जाएगा. यूनियन टेरिटरीज भी है, यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी मेंशन नहीं करता, लेकिन इंडियन स्टेट कंप्राइजेस यूनियन टेरिटरीज एज वेल. तो ये कौन सी टेरिटरीज है, कब फॉर्म हुई, इनका क्या बॉर्डर एरिया है ना, इनका क्या जोग्राफिकल एरिया है, हमें पता होना चाहिए. एंड दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू शेड्यूल 1 और थ्रू शेड्यूल्स, है ना. सो आई टॉक्ड अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. There has to be the Indian constitution has certain articles which tells us that we have an official language and the role of official language is so and so. But which are the official languages? We should know, because these languages at times are added and they might be deleted also. Yes, so we should know all that. So where do we find them? That information is found in the schedules. So the extra information pertaining to the articles and the parts are mentioned under the schedules. Fine. So that is the purpose of the schedule. लेकिन हमने शेड्यूल में क्यों लिखा, हम इसी में आर्टिकल 1 में लिख देते, ये सारे स्टेट्स क्या हैं, कब फॉर्म हुए, उनका एरिया क्या है, यूनियन टेरिटरीज कौन सी है. Why have we come out with a schedule separately? Yes, it would become, the articles will become very bulky. कॉन्स्टिट्यूशन का साइज तो सेम ही रहेगा, लेकिन आर्टिकल इन इटसेल्फ विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अभी आर्टिकल 1 पढ़ना कितना आसान है. इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. वी अंडरस्टैंड द क्रक्स, द कंसेप्ट हमें समझ में आ गया. अगर इसी को हम ओवरलोड कर दे इन्फॉर्मेशन के साथ, एन इंडियन स्टेट बहुत बार रीऑर्गेनाइज हुआ है, सो उसमें कितना डिटेलिंग है, इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ लेमैन टू रीड, है ना. फॉर द ईज ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, the constitution makers have chosen the route of schedules. तो जो extra additional information है उनको देनी है, they have provided through the schedules. Yes, fine. So that is what articles. What are articles? They incorporate the substantive provisions in the constitution. What are parts? They are broad structural categories, and schedules, they are explanatory tables attached to the constitution. एंड शेड्यूल्स, हमने ये जो आइडिया है ऑफ शेड्यूल्स, ये हमने कहाँ से बोरो किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फॉर द फर्स्ट टाइम दिस एक्ट मेंशन्ड 10 शेड्यूल्स. द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया अडॉप्टेड comprised only 8 schedules, and with subsequent amendments you find that the constitution today has come to comprise of 12 schedules. Yes, and presently you find that the Constitution of India has 448 articles which are divided in 25 parts and 12 schedules. So of course we have a lengthy constitution. Yes, this detail is mentioned in the PPT, so I'll not dictate this to you. Yes, is it fine? है ना. आप बस एक heading दे सकते हो, structure of the constitution, या the structure of Indian constitution. एग्जाम्पल है पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज, स्टेट्स एंड टेरिटरीज या यूनियन एंड टेरिटरीज. यस, पार्ट 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है सिटीजनशिप से. Yes, part 2 deals with citizenship. Part 3 fundamental rights. Part 4 DPSP. Fine. तो आपने लिखा है structure of the constitution, and just as I had written, the structure comprises parts, articles and schedules. Yes, the structure comprises parts, articles and schedules. If you want, you can also write down the examples of part. Part 1 is union and its territory.
है ना. पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड उसी हाइफन लिख के लिखो covered from article 1 to article 4. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 1 2 3 4 डील विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. पार्ट 2 इज सिटीजनशिप. है ना. एंड सिटीजनशिप इज डेल्ट थ्रू आर्टिकल 55 to 11. पार्ट आर्टिकल 5 to 11. Yes. Part 3 is fundamental rights. Etc. Yes. Fine. Fine. अच्छा, शेड्यूल्स लिख लो आप. थोड़ा सा शेड्यूल्स में लिखो. they comprise extra information about articles or parts yes. schedules are also comparable to annexers, है ना. आप जब बुक्स पढ़ते हो तो आपको दिखता होगा annexers towards the end of the book. There is a heading known as annexers which is given. You can write down they are like annexers. तो लिखो purpose of schedule, purpose of schedules या schedules. Put a hyphen, write down to simplify the articles for general understanding. Fine. So this is with respect to the structure of the constitution. Next we are starting with the features. The salient features of the Indian Constitution. Give the heading as salient features of the Indian Constitution. First feature is it is the lengthiest written constitution. It is the lengthiest written constitution. Yes. So there are two keywords, lengthiest and written. Yes. एक है lengthiest, दूसरा है written. ठीक है, आप उन दोनों को अंडरलाइन कर सकते हो. written constitution you understand, हमने पहले भी डिस्कस किया है. there are two types of constitution. एक होता है written, एक होता है unwritten. इसके और दूसरे क्या नाम है? partially written. Yes. So written constitution, it will be well documented as part of a single document, है ना. एक सिंगल डॉक्यूमेंट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा. और जो अनरिटन है या पार्शियली रिटन है उसका क्या है? सर्टेन पार्ट्स माइट बी documented, other might be based on customs, traditions, conventions. So you can write down part of it is written and rest
is based on judicial pronouncements, traditions, conventions, etc. Yes, fine. Now it is the lengthiest constitution. Yes, lengthiest constitution का मतलब क्या है? Please write down as I discuss. Lengthiest का मतलब क्या है? It is most worded. बहुत ज़्यादा detailing है. Very detailed, elaborate, constitution. We can also say it is very comprehensive. Yes, have you mentioned these words? है ना, जब कहते हैं लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या? इट इज मोस्ट वर्डेड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वेरी डिटेल्ड, इट इज वेरी एलैबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन. Yes, have you all written down what I have written? Fine, all of you have written. लिखो. Fine. Now what is the reason why we have the lengthiest written constitution in the world? What are the factors which contributes to the length of the Indian constitution? Geographical factor. पहले लिखो, give the, have you all written down this much? Write down the factors that have led to the size of the Indian constitution, large size of the Indian constitution. Factors which have led to large size of the Indian constitution. What are the factors? First factor is geographical factor. या आप सीधा लिख सकते हो geographical vastness of India. We are a very large country. We are the 7th largest country. Yes, and यहाँ पे distinct regions है, distinct geographical regions है. Yes, so you have the northeastern region with its own distinctive territory. Yes, you have South India, you have North India, you have the Thar desert, you have J&K. So you find that you had states like Sikkim, which were incorporated through various other means. So you find that given this geographical size and geographical distinct nature, distinct regions that we have, to write a constitution for all of it, and therefore we need the size that accounted for the size. You have certain tribal areas. You have these geographical distinctiveness, geographical large size of the country, which has resulted in a very large size of the Indian constitution. What else? ये है, अभी इस पे आएंगे. अब पहले दूसरे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे. हाँ, हिस्टोरिकल फैक्टर एक है. हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है हमारे कंटेक्स्ट में? इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Government of India Act 1935. Fine. So this was also Government of India Act 1935 was a very lengthy document. And Indian Constitution we will discuss.
द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे प्रोविजंस हमने इसी से बोरो किए हैं, तो इस वजह से दिस हैज कंट्रीब्यूटेड to the length of the Indian constitution, because it was immediately preceding the Indian constitution that Indian constitution makers formulated. British India had come out with Government of India Act 1935, और इसका बहुत influence रहा है, which is a very lengthy document, and therefore you find that the Indian constitution is also very very lengthy. What else? What is the other factor? लिखो, पहले लिखो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, द रीजंस व्हाई वी हैव सच अ लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसका थर्ड रीजन इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी हैव वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एज वेल एज द सेंटर. यस, अनलाइक से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ सेंटर से डील करता है, स्टेट्स हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस. दैट इज नॉट द केस इन केस ऑफ इंडिया. वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट. यस, तो इस वजह से लेंथ हो गया, क्योंकि हमें हर स्टेट का डिस्टिंक्टिवनेस, जनरल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द स्टेट was incorporated in the single constitution. Fine. So you have union executive पे भी chapter है, तो state executive पे भी chapter है ना. union legislature पे chapter है, state legislature पे भी chapter है, तो it has contributed to the length. And fourth point, as he mentioned, write down dominance of legal luminaries या lawyers. Legal luminaries or lawyers. Yes, so all this has contributed to the length. And the last point, yes, one of you had mentioned flexibility. Indian constitution, write down, Indian constitution is a blend of, is legal luminaries मतलब lawyers, है ना. legal luminaries की आदत होती है कि बहुत complicated भाषा में, है ना, they speak and they speak in complicated language and there's a lot of jargon that they use in that language. Yes, as a consequence the text becomes very very lengthy. एंड जो लीगल ल्यूमिनरीज होंगे ना, वो उनकी आदत होगी बहुत डिटेलिंग में जाने की, है ना. एक जनरल आदमी जनरल प्रोविजंस की बात करेगा, बट लीगल ल्यूमिनरीज विल गो इनटू वेरी माइन्यूट डिटेल्स एंड दिस विल मेक थिंग्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. फाइन, फाइन. द लास्ट रीजन, द फिफ्थ रीजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. Flexibility and rigidity. Yes, write down, इसी में लिखो, Indian Constitution therefore has been referred to as a living document. A living document. Yes. तो अब इससे क्या हो रहा है, जो blend of flexibility and rigidity है, उससे length कैसे आ रही है constitution की? Because we are amending, every amendment generally gets mentioned within the constitution. So as of September 2023, we have had 106 constitutional amendments. Yes, so we have large number of constitutional amendments, plus legal मतलब को समझाने के लिए there are several judicial pronouncements. Judiciary also interprets. एक समय था, एक आर्टिकल है, बहुत प्रोमिनेंट आर्टिकल है, राइट टू लाइफ, उसको बहुत नैरो वे में जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया. बाद में जुडिशरी ने अपना इंटरप्रिटेशन बदल दिया और उसको एक बहुत ब्रॉड मीनिंग दे दिया. फिर कहा कि, है ना, राइट टू लाइफ
incorporates right to clean water, right to clean environment, right to privacy, है ना. तो सब कुछ ही उसमें वो incorporate करते जा रहे हैं. तो the length of that article is growing, the explanation of that article is growing. Yes, therefore this flexibility that we have rigidity where we are safeguarding the basic nature of the Indian constitution, but the flexibility brought in through the flexibility brought in through amendments plus judicial pronouncements या judicial interpretations of the provisions have contributed to the length of the constitution, have contributed to the length of the constitution. Please write down. And the flexibility brought in through amendments, yeah, the flexibility visible through amendments and judicial pronouncements, judicial pronouncements or judicial interpretations, or judicial interpretations. Yes, of the provisions of the constitutional provisions, of the constitutional provisions yes, contributes to the length of the constitution, contributes to the length of the constitution या Indian constitution. Yes, इसी में आप लिख लो इसी में लिखो next point, until October 2023, there have been 106 constitutional amendments, yes, next point इसी में लिखो judiciary for example has expanded the scope of article 21 of the Indian Constitution, Article 21 of the Indian Constitution. और Article 21 क्या है, लिख लीजिए, right to life. Yes, has expanded the scope of Article 21 of the Indian Constitution that deals with right to life. Yes, fine. So these are the reasons why you find that we have such a lengthy constitution. The next feature, in fact, we talk about how the Indian Constitution represents a blend of rigidity as well as flexibility. Yes. Now, what is the purpose? Heading de lo है ना, a blend of rigidity and flexibility. Second feature is a blend of rigidity and flexibility.
Yes. What is the purpose of having rigidity in the constitution? Yes, the basic nature or the fundamental nature and values should be safeguarded. Should be safeguarded. Yes, the basic nature or the, please likhiye, the basic nature or the fundamental values of the constitution should be safeguarded. Yes, they should not be open to changes. आज के दिन इंडिया सेक्युलर है, कल स्टेट रिलीजन आइडेंटिफाई कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए. कुछ फंडामेंटल वैल्यूज शुड बी सेफगार्डेड. And when it comes to flexibility, what is the purpose? Yes, yes, to adapt to changing time, changing circumstances and needs. To adapt to changing times, changing circumstances and needs. Yes. What do we how do we signify or what do we mean by rigidity of the constitution? Rigidity of the constitution का मतलब क्या है? Yes. And rigidity of constitution का मतलब क्या है कि it is not easy to amend the constitution or change the constitution. It is not easy. Please write down along with me. It is not easy to change or amend the constitution. Yes. Yes. Need for special procedure to amend the constitution. Yeah, amend, let us be specific, certain provisions of the constitution. Need for special procedure. Yes? Yes, all of you are writing. What do we mean by rigidity? That it is not easy to change or amend the constitution. There is a need for special procedure. You can underline need for special procedure to amend certain provisions of the constitution. Yes? Now when it comes to flexibility, what do we mean by flexibility? है ना? What do you mean by flexibility? To adapt, है ना? To change. It, इसका अगर हम इसका क्रक्स में मीनिंग देखें तो easy to change, है ना? It is easy to change या amend constitution, yes, certain provisions of the constitution. Yes. Write down, इसी में लिखो, certain constitutional provisions. Under flexibility, write down certain constitutional provisions.
certain constitutional provisions, write down, can be amended in the same manner as the ordinary laws are made. Yes, fine. So we find that under the Indian Constitution there is rigidity. Certain provisions are difficult to amend and certain provisions are easy to amend, and they can be amended in the same manner as ordinary law is made or enacted. Yes. So now how is it? So write down, under Indian Constitution there are 3 ways to amend the Constitution. There are 3 ways to amend the Constitution. Yes. Now which are these 3 ways we'll mention. First way क्या है? Certain provisions can be amended by simple majority. Can be amended by simple majority. That is 50% or more of those present and voting. And 50% and more of those present and voting. तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उससे 50% से ज्यादा अगर वोट मिल जाए, yes, then the provision is amended. Yes, certain provisions can be amended through special majority. There is requirement of special majority. Yes. Yes, I'll give example. In fact, all 3. Wait, है ना, पहले लिखते हैं. Amended by simple majority. Certain provisions can be amended by special majority. ठीक है, अब ये special majority क्या है? 2/3 members, है ना, more than 2/3 members present and voting plus 50% of total strength of the house, है ना, लोकसभा है या राज्यसभा है जो भी वहां पे, है ना, you need 2/3 members present and voting plus 50% of the total strength of the house. ठीक है, ये भी एक प्रोविजन है जिसके थ्रू हम अमेंडमेंट करते हैं. और थर्ड क्या है? थर्ड यू कैन सिंपली से रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट्स. यहाँ पे क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, इसके अलावा कंसेंट या रैटिफिकेशन भी बोलते हैं. ठीक है, कंसेंट ऑफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट्स. यस, फाइन. नाउ इफ आई वर टू गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच,
Example in case of simple majority requirement is creation of new states, है ना, changing borders या areas of existing states. This is done by simple majority. And I had given you the example under, once we were discussing in the class, state reorganization that was undertaken in India based on linguistic basis. Yes, we could easily do that because through simple majority, through those present and voting, you can create a new state, you can alter the boundaries of an existing state. Yes, special majority का example with respect to articles under fundamental rights and DPSP. अगर यहाँ पे कुछ amendment करना है तो है ना, you need special majority. Yes, fine. DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है. एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स, जहां पे द फेडरल डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज इन्वॉल्व्ड, जहां पे भी है ना द प्रोविजन डील्स विथ डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. इफ यू वर टू ब्रिंग अबाउट एनी अमेंडमेंट देयर, यू नीड special majority plus consent of 50% of the states. Yes, one example under federal division of power का change, there is under schedule 7 of the Indian constitution, वो कुछ subjects जिन पे state legislate कर सकता है, जिन पे center legislate कर सकता है, जिन पे दोनों legislate कर सकते हैं, वो mentioned है. अगर वहां पे आपको उस लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में ऑल्टरेशंस करनी है, यू रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट्स. यस, नो नीड टू मेंशन दैट इन डिटेल ऑल्सो, दिस मच इज इनफ. फेडरल डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जहां पे इन्वॉल्व होगा, वहां पे कंसेंट ऑफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट इज रिक्वायर्ड. Fine. So you find the simple majority क्या है? This is the manner in which ordinary law is made, and these two are, this is symbolic of flexibility of the Indian Constitution, and these two provisions are symbolic of rigidity. It is not that easy to amend the Indian Constitution. Yes. आप इसके नीचे लिख सकते हो आफ्टर एग्जाम्पल दैट सिंपल मेजॉरिटी इज, रिक्वायरमेंट ऑफ सिंपल मेजॉरिटी इज सिंबॉलिक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी इज सिंबॉलिक ऑफ रिजिडिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन. Any doubts? Any doubts by the online students also? Yes. Fine. So this is a feature which is very unique to Indian Constitution, and we take a lot of pride that our Constitution is the perfect blend, we say, perfect blend of flexibility and rigidity. Fine. Fine. The next feature of the Indian Constitution, it is drawn from a number of sources. It is drawn from a number of sources. Drawn from a number of sources. इसमें लिखिए, है ना, write down under it, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar proudly acclaimed that the Constitution of India
has been written after ransacking 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 है ना, मतलब digging through, after ransacking all the known constitutions, of the world. So he took a lot of pride in proclaiming such, that Indian constitution has been framed after ransacking, after going through all the known constitutions in the world. We have borrowed features from various constitution according to Indian needs and Indian requirements. Yes, write down. India has borrowed features या provisions from different constitutions based on its needs and requirements. Yes. Now, what are the various sources from which we have borrowed features of our constitution? एक prominent source है the British Constitution, and unwritten है, लेकिन constitution तो है ब्रिटेन के पास, तो उससे हमने क्या features borrow किए? सबसे पहले parliamentary form of government. Yes, एक second, let me. Parliamentary form of government. Yes, वो idea of rule of law. Please write down along with me, है ना. various sources करके आप सबहेड दे सकते हो, उसमें लिखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. यस, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया द आइडिया ऑफ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यस, then we have borrowed the idea of rule of law. What else? Yes, we have borrowed, है ना, जो स्पीकर का पोजीशन है लोकसभा में, there is a speaker, so this institution of speaker and its role, और ये क्या रोल प्ले करेगा? Yes. Yes. Then as far as the electoral system of India, हमारे यहाँ किस तरह से हम elections conduct करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? First past the post system, FPTP, first past the post system. जिसको भी majority of votes मिले, है ना, that is considered that person has been elected. Yes, simple majority of votes चाहिए to win an election. Yes, so these are some of the provisions that we have borrowed from the British Constitution. Yes, then from USA's Constitution. Preamble नहीं बोलेंगे, and preamble is, Indian preamble is based on objective resolution and it has been inspired by UN Charter, which in turn was inspired by US Constitution, या US का preamble. Yes, you have this idea of independence of judiciary, and power of judicial review. Do you remember what was judicial review? Yes, power of, yes, doctrine of checks and balances में पढ़ा हमने.
प्लस इसका मतलब क्या है, द जुडिशरी कैन लुक इनटू द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, it can look into the executive action taken by the executive and see whether the law as well as the executive action are in line with the Indian Constitution. If they find that it violates the Indian Constitution, they can declare such a law or executive action as unconstitutional, as null and void, as ultra vires. Fine. So this idea of independence of judiciary and its power of judicial review has been borrowed from US Constitution. What else? Yes, fundamental rights. Yes. Then from Irish Constitution. है ना, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या प्रोविजन लिया है, डीपीएसपी. फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, द फेडरल डिविजन ऑफ पावर with a unitary tilt, with a unitary tilt. Yes. जब फेडरलिज्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसका डिफरेंस, है ना. तो कुछ लोग हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं क्वासी फेडरल, बट वी डोंट नॉट बिलीव इन दिस क्रिटिसिज्म. वी बिलीव दैट वी आर वेरी मच फेडरल. We are at times more federal than other countries, है ना. तो वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म का टॉपिक. So we find that federal division of power between center and state with a unitary tilt or tilt towards the center. This has been borrowed from Canadian Constitution. Fine. So these are some of the examples. एक हमने already पढ़ रखा है, French Constitution से क्या borrow किया हमने, idea of liberty, equality and fraternity. Idea of liberty, equality and fraternity. हाँ, हम जर्मनी नहीं बोलते, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर से भी लिया है. और वैसे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑल्सो हैड इमरजेंसी प्रोविजन. तो डायरेक्ट हमने बोरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया है. ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी लिख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. हमने यहाँ इससे क्या क्या बोरो किया है, the structure of Indian judiciary. We will study the क्या है structure. ठीक है. तो structure of Indian judiciary हमने borrow किया है. Then emergency provisions, emergency provisions हमने borrow किए हैं. Then provisions with respect to public service commission, we have borrowed from Government of India Act, etc. Yes, the position of governor, the role of governor, हमने काफी कुछ borrow किया है Government of India Act से. Yes, some of the popular things I've mentioned. Actually, and what you were mentioning about German Constitution, एक तो वो वीमर Constitution बोलते हैं, मतलब जर्मनी अपने हिस्ट्री में एक समय वो वीमर रिपब्लिक बन गई थी. अब उसमें नहीं जाएंगे वो क्या था, है ना. हर कंट्री एवोल्यूशन में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करती है, तो उन्होंने एक समय अपने आप को वीमर रिपब्लिक डिक्लेयर करके एक वीमर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. उस दौरान हमने
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया एक्चुअली, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। जापान से भी लिया है हमने, हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस से लिया है ना। दीज आर द प्रोमिनेंट वन जो अभी हमें समझ में आएगा, जो कुछ है ना कंसेप्चुअल चीजें हैं। फाइन, सो वी हैव मेंशन्ड ऑल दोज। फाइन फाइन, सो दीज आर द वेरियस sources from which we have drawn our constitution. We also classify structural part of the constitution किससे लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। philosophical part मतलब फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट यूएस से, डीपीएसपी आयरलैंड से। एंड पॉलिटिकल पार्ट मतलब पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फाइन, नाउ हैविंग ड्रॉन, है ना, हैविंग ड्रॉन आई हैव जस्ट गिवन द टेबल, यू कैन गो थ्रू, नहीं समझ में आए तो भी नो प्रॉब्लम। नाउ वुड इट बी राइट टू कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट अ बैग ऑफ borrowings? Yes, the question arises that if we have just borrowed the provisions from different constitutions, then what is unique to Indian constitution? Would it be right to call it just a bag of borrowing? Yes or no? No. Why no? पहले ये क्वेश्चन लिखो आप। Would it be right? Would it be right to call Indian Constitution just a bag of borrowing? Yes, would it be right to call it just a bag of borrowing? No, it would not be right. Write down no. No. और उसके बाद लिखो reasons. Yes. What are the reasons? What are reasons? First reason. Yes, though we have borrowed the features, but we have adapted them to Indian needs and Indian circumstances. हमने फेडरलिज्म, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वैसे हमने यूएस से बोरो किया है, लेकिन उसको फिर हमने अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू इंडियन नीड्स, तो इसीलिए उसमें एक सेंटर का बायस इंट्रोड्यूस कर दिया। यस, सो सेक्युलरिज्म एज अ कंसेप्ट यूरोपियन कंसेप्ट था, लेकिन वो एक्चुअली हमने इंडियन वे ऑफ लाइफ, मल्टीकल्चरलिज्म, सर्वधर्म सद्भाव या संभाव के कंटेक्स्ट में अडेप्ट किया है। फाइन, सो दो राइट डाउन दो द provisions have been borrowed they have been borrowed from different constitutions, comma, they have been adapted to Indian needs and circumstance. Yes, next reason लिखो। The Indian Constitution reflects principles and ideals of
Indian freedom struggle which is unique to India, which is unique to India. And third, most detailed constitution of the world. It is the most detailed. इसका मतलब बहुत कुछ हमने भी ऐड किया है उसमें. Yes, it is the most detailed constitution of the world. Fine. Fine, so that is the idea. So we say that no, it is not right. In fact, Ambedkar also said that it has been framed after ransacking all the known constitutions of the world. But there are reasons not to call Indian constitution just a bag of borrowings. Yes, because it has, these provisions have been adapted to Indian needs and circumstances. They reflect the values and principles of Indian freedom struggle. And third, it is the most detailed constitution of the world. Fine. Next feature is parliamentary form of government. Fine. Fine. तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड पार्लियामेंटरी फॉर्म, उसके बाद आप लिखना. ठीक है, ठीक है. दिस इज वन कंसेप्ट दैट आई वांट यू टू हैव क्लैरिटी, है ना. सिंपल कंसेप्ट है लेकिन उस पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए. फाइन. नाउ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ फॉर अ generally government of a country comprises the legislature, the executive and judiciary. Yes, yes. The legislature क्या करता है? It formulates या enacts laws. ठीक है, it makes, formulates, enacts laws. Executive क्या करता है? It implements laws. And judiciary resolves dispute, और हम कहते हैं adjudicate. Adjudicate laws. ये देखता है कि laws constitutionally valid है या नहीं है. Fine. So this is the prominent function performed by each branch or each organ of the government. Now what comprises the legislature? Simply speaking, parliament. The parliament comprises the legislature. और पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है. लेमैन जो हमें पता है. एग्जीक्यूटिव, हु कंप्राइजेस द एग्जीक्यूटिव? एक तो एक होता है हेड ऑफ स्टेट. देखो, अच्छा ठीक है, लेट मी गो इनटू व्हाट ही इज सेइंग, सिविल सर्वेंट वगैरह वाला है ना. एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होता है? ब्यूरोक्रेट्स. ठीक है, लेकिन अभी हम देखो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी हम जब पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव को नहीं रेफर करेंगे. हम जब भी बात करेंगे पार्लियामेंटरी फॉर्म, हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे ही ध्यान देंगे. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी दो है. दो कौन है? एक है हेड ऑफ स्टेट. हेड ऑफ स्टेट कौन है इंडिया में? प्रेसिडेंट. ठीक है, और एक है हेड ऑफ गवर्नमेंट. यस, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज पीएम, हु एक्चुअली हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उसको हम सीओएम बोलते हैं, है ना. द पीएम एंड द सीओएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो पीएम है और साथ में उसके पास सीओएम को हेड करता है वो. जो हेड ऑफ द स्टेट है, ही इज de jure head.
डिजूर मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मतलब ये टिट्यूलर है, मतलब इसके पास रियल पावर नहीं है, रियल पावर नहीं है ना। और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है जो पीएम है ना, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द रियल हेड। ठीक है, ये एक्चुअली पार्लियामेंट्री फॉर्म का फीचर है, बट आई हैव टोल्ड यू हियर इटसेल्फ। हेड ऑफ गवर्नमेंट इज, है ना, ये जो पीएम हेड्स द सीओएम, ये रियल हेड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी फैक्टो हेड है ये। ठीक है, और जुडिशरी, यू नो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो जुडिशरी है। फाइन, सो दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, इट कंप्राइजेस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हर देश में यही स्ट्रक्चर होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यस, लेजिस्लेचर इज जनरली द पार्लियामेंट और द स्टेट, वहां पे जो भी लॉ फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव विच विल एग्जीक्यूट द लॉ, तो जनरली प्रेसिडेंट होता है ना, पीएम है यहाँ पे कहीं पे, और जुडिशरी तो जुडिशरी है, जजेस है ना, एंड द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फाइन, नाउ व्हेन इट कम्स टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के 3 कार्डिनल फीचर्स हैं, 3 कार्डिनल फीचर्स हैं। 3 कार्डिनल फीचर्स हैं मतलब 3 एसेंशियल, yes, 3 essential features of parliamentary form of government hai. Which are these essential features? First, first we say that there is presence of nominal and real head. Presence of nominal and real head. तो इन केस, ये मैंने आपको वही बताया कि दिस पॉलिटिकल डिवीजन, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, या दिस डिवीजन इस, है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिखता है। तो नॉमिनल हेड कौन है? द प्रेसिडेंट है, एंड रियल हेड है पीएम हेडिंग द सीओएम। दिस इज द रियल हेड या रियल एग्जीक्यूटिव। फाइन, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ बोथ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और द नॉमिनल हेड एंड द रियल हेड। नॉमिनल हेड को हम डिजूर भी कह सकते हैं, लीगली ये हेड है। Every international treaty that India signs is signed in the name of the president. Yes, but the real power, the de facto power, is actually exercised by the prime minister. Fine, so this is one. Second feature क्या है? जो yes, जो real head है, मतलब द प्राइम मिनिस्टर हेडिंग द सीओएम इज responsible, let me give this feature, wait. The executive in case of parliamentary form of government is drawn from legislature. It is drawn from legislature. ठीक है, ये बहुत यूनिक फीचर है ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट द एग्जीक्यूटिव इज एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर. व्हाट डज दिस मीन? दैट द मिनिस्टर्स इन इंडिया आर आल्सो एमपीज. yes, the party which is elected to power, general election होंगे. Both, for example, BJP and Congress, let us just simplify, they are fighting elections. Supposedly BJP है ना won the elections. जब BJP जीता elections, that means BJP as a political party has secured majority in the Lok Sabha. Yes, Lok Sabha में majority seats parliament में उन्हीं को मिली. And once they have the majority, then the leader of BJP will form the government. The leader of BJP will go to the president of India and say that I want to form the government. I enjoy the majority of the house. Yes,
and therefore we say the executive. So the president will administer the oath to the leader who becomes the PM, and then the PM will say these are the MPs that I want to become ministers of these portfolios. है ना? So you find that the executive is drawn from the legislature itself. Yes, fine. So this is the idea that in case of parliamentary form of government, the executive is drawn from the legislature. Yes, and presidential form of government में ऐसा नहीं होता है, ठीक है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट खुद ही डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और फिर वो जो जीत जाता है he forms his own government. He will say you become my foreign minister, you become my home minister, whatever it is. Yes, and they are experts in the field and they are not necessarily drawn from the legislature. वो MPs नहीं होंगे, है ना, US कांग्रेस का हिस्सा नहीं होंगे, US सेनेट का हिस्सा नहीं होंगे. फाइन. अभी उसमें नहीं जाएंगे, कौन दिलाता है ओथ वो हमारा पर्पस नहीं है. लेकिन अगर गवर्नमेंट whosoever is elected, है ना, whosoever wins, एक सेशन होता है जिसमें कहते हैं कि he is the victor and he has become the president. फाइन. अभी हम एग्जीक्यूटिव इज ही ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, तो ये फीचर बहुत यूनिक है ऑफ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड अनदर वेरी यूनिक फीचर ऑफ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द एग्जीक्यूटिव is collectively responsible to the legislature. The executive is collectively responsible to the legislature. मतलब the PM heading the COM जो council of minister है, it will continue to constitute the government till the time it enjoys support of majority of the house. जैसे ही they lose the support of majority of the house, the government will fall. Yes, the Lok Sabha can pass no confidence motion. Yes, and the government will fall. So the government continues to be in power till the time it enjoys confidence of the legislature, yeah, the majority of the house of the legislature. Yes, majority of Lok Sabha. Fine. Is it clear? These are the three fundamental features of a parliamentary form of government. If you were to identify whether this form of democracy is parliamentary form of government or not, then you will have to look for these features. कि यहाँ पे जो executive है, they are of two types. Nominal executive है and de facto executive है. अच्छा ऐसा है तो fine, let's move to other. फिर the executive, has he been drawn from the legislature? And third, is the executive collectively responsible to the legislature? Yes, we will come to it. Division of power नहीं बोल के बोलेंगे separation of power is, है ना, जैसे जो हमने पढ़ा है मोंटेस्क्यू, हमने पढ़ा था, मोंटेस्क्यू ने एक थियोरी दिया है separation of power between judiciary, legislature and executive, between the three organs. यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर the executive is drawn from the legislature, separation of power थोड़ा वो हो जा रहा है. वही पार्लियामेंट में जो इंडियन मिनिस्टर्स है वो पार्लियामेंट में बैठ के लॉज भी पास कर रहे हैं, एनैक्ट कर रहे हैं, और फिर उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना भी उन्हीं का काम है ना. तो दैट इज देयर. यस,
एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में इंटरलिंकेज है, इस वजह से सेपरेशन ऑफ पावर गेट्स लिटिल डाइल्यूटेड व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अगर हम एक ही इंसान एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है और लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, मतलब उसके पास दोनों डोमेन के पावर है, तो सेपरेशन ऑफ पावर कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। यस, यस दैट इज ट्रू। दैट इज, हम कहते हैं एक लेक्यूने कह सकते हो आप उसको, एक क्रिटिसिज्म कह सकते हो ऑफ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फाइन, इज इट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, let us write it down now. हाँ, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब आपका कौन सा मिनिस्ट्री दिया है, आपको रेलवेज दिया है, आपको विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर दिया है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया है, क्या मिनिस्ट्री मिला है, वो आपका पोर्टफोलियो है। फाइन, फाइन, लेट्स राइट डाउन, राइट डाउन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थ्री essential features, three essential features. Three essential features are point number 1, presence of nominal and real executive, presence of nominal and real executive. Put a hyphen, write down. The president in India is the head of the state, and represents the nominal executive, full stop. He is, आप ये सब अंडरलाइन करो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड्स। He is the de jure power, de jure मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पावर वो है ना। हेड ऑफ इंडियन स्टेट इज द प्रेसिडेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। चेंज द पैराग्राफ, सेम पॉइंट। On the other hand, the PM, the Prime Minister, heading the Council of Minister, is the real executive, full stop. He is the head of the government, full stop. He is the de facto executive, Second point, the executive is drawn from the legislature. Yes, write down. The ministers are
the members of the parliament as well. Are members of the parliament as well. They could draw this first. The bigger circle represents the legislature. Yes? The bigger circle represents the legislature. And the smaller circle represents the executive. So the executive is drawn from the legislature. Yes? इसी में लिखो, इसी point में change the paragraph, write down. It means that a person cannot be a minister without being the member of parliament. Yes, without being the member of parliament. General understanding यही है. For a person to become the minister, you have to be an MP. ठीक है? Fine. इसमें कुछ और एक nuance है. मैं उस nuance में नहीं जा रही. ठीक है? We are just leaving at it. यही है इसका crux, यही है that for somebody to become a minister, you have to be a member of parliament. Fine. The third point is the executive is collectively responsible to the legislature. To the legislature, put a hyphen. अच्छा ठीक है, इसी में लिखेंगे to the legislature, write down. It implies that the government can be in power only till the time it enjoys the confidence of parliament in general and Lok Sabha in particular. And parliament in general and Lok Sabha in particular. Full stop. इसी में change the paragraph, write down. The government will fall in case the Lok Sabha passes no confidence motion. Yes, fine. तो हमने क्या कहा है? पार्लियामेंट इन जनरल, लोकसभा इन पर्टिकुलर. मतलब जो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है of the executive to the parliament is actually exercised by Lok Sabha. It is only Lok Sabha which can pass the no confidence motion. राज्य सभा नहीं पास कर सकता no confidence motion. ऐसा क्यों है?
अभी हम ऊपर से समझेंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो हम लोकसभा के मेंबर्स को ही इलेक्ट कर रहे होते हैं। राज्यसभा मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इनटू राज्यसभा। लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा इज द हाउस ऑफ द स्टेट। ठीक है, समझ में आया? Yes, why is it so? Why is it that only Lok Sabha can pass no confidence motion? Yes, Rajya Sabha cannot pass no confidence motion. Yes, because the members of Lok Sabha are directly elected by the people. Yes, Lok Sabha is known as the house of the people. And Rajya Sabha is known as House of the State. Its members are indirectly elected by the members of the State Legislative Assembly. Fine? Fine? सबको समझ में आ गया parliamentary form of government? These are the basic principles. Now coming back, now what are the merits and demerits? Yes. What will happen in that case? So he is saying कि हमने क्या कहा, एग्जीक्यूटिव हैज टू बी एन एमपी। अब चाहे राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो, वो सारे एमपीज हैं। तो अ मेंबर ऑफ the COM or the Prime Minister herself can be from Rajya Sabha, लेकिन no confidence motion सिर्फ लोकसभा पास करेगी। तो what will be the impact on the members of Rajya Sabha? It will fall, they will fall। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? They will continue to be राज्य सभा members, क्योंकि राज्य सभा परमानेंट हाउस भी है। लेकिन क्या होगा? They will no longer, the government will fall। वो मिनिस्टीरियल पोस्ट खो देंगे, the government will fall, the country will head towards next general election। ये एक प्रॉब्लम है ना कि आप है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके जरूरी नहीं है एक गवर्नमेंट 5 साल चले, उससे पहले ही द गवर्नमेंट माइट फॉल। यस, फाइन। सो दैट इज द आइडिया, है ना। if the government, if the minister is from Rajya Sabha, the Lok Sabha passes no confidence motion, the government falls, no problem there। yes the government is for the people, ordinary people, and the ordinary people have lost trust in this government क्योंकि Lok Sabha is representative of the people। so if Lok Sabha says I have lost trust in the government, it implies that people of India have lost trust in this government। समझ में आया? Yes, so that is the idea। yes, Lok Sabha is house of people, so if house of people says we have lost trust in the government, it implies that people of India have lost trust in this government and it needs to change now। fine, so that is the idea। fine now next is, what are the merits of parliamentary form of government? Achha, first let's discuss merits, demerits, and then we'll discuss why India has adopted parliamentary form of government। what are the merits? yes, what are the merits? It ensures responsible या accountable responsible government। yes, how responsible government? yes, both का है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो, डेमोक्रेसी इज एक्चुअली अकाउंटेबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना। लेकिन जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव
is held periodically accountable to the people. डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर 5 साल पे द गवर्नमेंट कम्स टू सीक योर मैंडेट, लेकिन एक बार मैंडेट दे दिया तो हम तो उनको अब रिमूव नहीं कर सकते डायरेक्टली. वी आर नॉट अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. हम तो उनको नहीं कह सकते कि नहीं, योर टर्म इज ओवर, कम बैक. वी आर अनहैप्पी विथ यू, यू कम बैक. वील हैव टू वेट फॉर 5 years before the next elections. But in parliamentary form of government, the representatives we have sent, they can say that this people do not respect this government, we will pass a no confidence motion against this government. So this government, parliamentary form of government, executive is doubly accountable, yet doubly responsible. Once, periodically accountable to the people every 5 years, and also continuously responsible to the legislature. Legislature 10 दिन के बाद भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है. एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के साथ ऐसा ही हुआ. विद इन फ्यू डेज द गवर्नमेंट फेल. यस, fine. So that is the idea. So this is a responsible government because the government is doubly accountable. It is periodically accountable to people and continuously accountable to legislature. Yes. उसके अलावा नेक्स्ट मेरिट क्या है इसका? yes, you can write down responsible government. लिखो, चलो पहले लिख लेते हैं. Responsible government, the legislature ensures continuous accountability of the executive apart from periodic accountability ensured by the voters. Yes, fine. Second, more representative government. Yes, more representative कैसे? डेमोक्रेसी में वैसे भी रिप्रेजेंटेशन है, बट पार्लियामेंटरी फॉर्म में where the executive is drawn from the legislature, so there is a wider possibility that the executive should represent wider section of the population. And a parliament is said to be mini India or a mini nation, representative of the nation, and a miniature representation of the nation. And if the executive is drawn from this parliament, they can be drawn from wider sections of the society to ensure wider representation. Yes, let's write it down. Since the government is, since the executive is drawn from the legislature, comma, it is possible to provide representation to all sections and regions in the government.
in the government. Yes. What is the next merit? Policies are made for benefit of the people. State का तो benefit क्या है ना? State तो imaginary idea है ना? तो वो तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी तो डेमोक्रेसी का फीचर ही है कि जो भी पॉलिसीज बनेगी वो फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ बाय फॉर द पीपल है ना? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ का दूसरा एसेंशियल फीचर ये है कि देयर इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. Better coordination between legislature and executive. देखो, since executive is drawn from the legislature, comma, since executive is drawn from the legislature, comma, there is less scope of conflict between the two. Fine. So you find that there is less scope of conflict. For example, यूएस में प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंटरी नहीं है, तो वहां पे हम कई बार देखते हैं जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर में कंफ्लिक्ट. द एग्जीक्यूटिव वांट्स अ बिगर बजट, द लेजिस्लेचर रिफ्यूजेस. अभी रिसेंटली न्यूज में था, है ना? ऐसा भी हुआ है कि एग्जीक्यूटिव जनरली, एक कंट्री की ट्रीटीज कौन साइन करता है? एग्जीक्यूटिव साइन करता है. कंट्री साइन करके आ जाता है ट्रीटी, एग्जीक्यूटिव साइन कर देता है ट्रीटी, but legislature says that I will not ratify this treaty. I am unhappy with this treaty. Yes, लेकिन यहाँ पे क्या है? The executive is part of the legislature. तो उन्हीं को फिर से वोट करना है to say that yes, we have ratified the treaty. Yes, so there is scope of less conflict. Yes, in fact, this was one of the reasons why we adopted parliamentary form of government, because as a newly independent country, we could not have seen more conflicts. We could not have seen that those in power are not in line with one another. वो आपस में ही अगर लड़ झगड़ रहे हैं तो the country cannot focus on governance and development. Fine. What else? Any other merit? Easier to understand नहीं बोलेंगे, है ना? उल्टा इसमें से तो है ना, executive is drawn from the legislature, थोड़ा confusion हो जाता है. अगर अलग अलग ही हो तो इजी है, वो ज्यादा आसान है समझना. यस, एनी अदर? अब ये तो डेमोक्रेसी का फीचर है. एक पॉइंट लिखो, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट. फोर्थ मेरिट इज रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट. रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ठीक है? बेसिकली देखो, ये इंडिया के केस में इतना वैलिड नहीं है, लेकिन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जनरल फीचर है. यूके, जहां से हमने पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, we have taken inspiration from, has this feature of ready alternative government. And what basically it means, there is the concept of shadow government or the shadow cabinet. इसका मतलब क्या है? Shadow cabinet, as the name suggests, shadows the real cabinet. मतलब there is one political party which has won elections and has formed the government. Yes, the government comprises the PM and the COM. ठीक है? अब जो opposition party है, they will shadow, the leader of the opposition party will become the leader or the PM of the shadow cabinet.
और वहां पे हर जो पोर्टफोलियो है हर मिनिस्टर का शैडो क्रिएट किया जाएगा। रेलवे मिनिस्टर, जो रियल रेलवे मिनिस्टर है उसका ऑल्टरनेटिव इन द ओपोजिशन पार्टी। फाइनेंस मिनिस्टर उसका ऑल्टरनेटिव इन द ओपोजिशन पार्टी। एंड दिस शैडो parliament या the shadow cabinet will also deliberate on policy issues. Government of Britain will say this is my policy, official policy for railways. मैं ऐसा ऐसे I want to spend this much and create this much a railway line. तो अब shadow parliament will also deliberate कि मुझे इतने ही resources would had they been in power, what would have been their choice in the same circumstance. Yes, so it is like a practice for the opposition parties for the time they will come into power. Also, it gives the people a view कि opposition party अगर power में होती तो वो क्या करती. Yes, so they form what is known as the shadow cabinet or shadow parliament, and they are known to be the ready. ऐसा हो सकता है कि government of the day has fallen. So they can, rather than immediately going for election, they can see if the shadow cabinet is ready to come in power. If they enjoy the confidence of the house, they can be called into power. Yes, fine. So that is the idea. I just wanted to introduce this idea of shadow cabinet, yeah, shadow parliament. Write down. Write down, in the UK, the shadow government refers to the political opposition alternative to the ruling party, Write down, it is typically led by the leader of the opposition party and comprises senior members of his party who hold positions or ministries equivalent to those in the actual government. Yes, इसी में लिखो, change the paragraph, write down, in case the ruling party loses its majority comma, the head of the state can invite the opposition party to form the government. Full stop. Fine. So this is the idea of the shadow government, shadow cabinet, shadow parliament. Fine. So this is the idea. Fine. So these are some of the merits as far as parliamentary form of government is concerned. Next, what are the demerits?
क्या क्या दिक्कतें हैं इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की? फर्स्ट मेरिट क्या लिखा था हमने? डबली रिस्पॉन्सिबल, है ना, पीरियोडिक responsibility to the voters plus continuous responsibility to the legislature. But that means that the government can fall without completing 5 years because the legislature, the Lok Sabha, might pass no confidence motion. Yes, so it means it is an unstable government. Point number 1, unstable government. Yes, put a hyphen, write down can fall before, can fall before completing its full term in office. Second point जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, सेपरेशन ऑफ पावर इज डाइल्यूटेड. सेपरेशन ऑफ पावर इज डाइल्यूटेड. यस, फाइन, नो नीड टू एक्सप्लेन, समझ में आ रहा है. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अब क्या है इसमें? इसमें जो ये मिनिस्टर्स हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. दे नीड नॉट बी एक्सपर्ट. जिसको होम मिनिस्ट्री दी है, जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी है, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड नेसेसरली. यस, सो बेसिकली दैट इज द आइडिया, दैट इट इज अ गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, है ना. देखो, थर्ड इज गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, AMATEURS. Put a hyphen. They need not be, the ministers need not be ministers need not be experts in their field, in their field, in their field. Yes, full stop. Fine. So these are some of the demerits when it comes to the parliamentary form of government: unstable government, dilution of, separation of power, and government by amateurs. In fact, अगर कोई political party है जिसको absolute majority है, absolute majority है, इसका मतलब no confidence motion cannot be passed, है ना. उनके पास absolute majority है in the लोक सभा. Yes. तो वो there is a lot of concentration of power that happens in such a government. Yes, so separation of power gets diluted. Fine, coming back to the next head, write down, give the heading. Why India adopted parliamentary form of government? Why India adopted parliamentary form of government? Yes. क्यों अडॉप्ट किया अब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यस, effective raising of the voices of the common mass, yeah, because of preference for a more responsible government. Because देखो, हम newly independent country, remember the circumstance, we were a newly independent country जहाँ पे literacy, not education, but literacy stood at 17%. Yes, we were an extremely poor nation. Yes, and in such a circumstance, uneducated, did not have any experience with democracy as such. Yes, and people, since being uneducated, they were not aware also. Leaders might be aware of what it means to live in a democracy, but people were not. They had been used to living under a colonial rule for 200 years. उससे पहले भी monarchies थी.
कभी भी डेमोक्रेसी वैसे हमने विटनेस नहीं करी. तो इट इज इन दिस कंटेक्स्ट. Now India had adopted universal adult franchise, but because our belief that yes, everybody should be given the right to decide for themselves, yes, liberty was the prime value. तो उस context में we wanted कि people, there should be double check on the government. People will not be, maybe the people might not be wise enough to ensure sufficient accountability through periodic checks. There is a need for continuous check on the executive by the legislature. Yes, therefore we chose a parliamentary form of government. Write down point number 1. Preference for a responsible government. Yes, write down. India preferred need for continuous check on the executive, apart from periodic checks by the people through elections. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रीजन क्या है? मैंने आपको बताया, एज ए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री वी डिड नॉट वांट डेडलॉक्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. वी वांटेड मोर कोऑर्डिनेशन एंड लेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. सेकेंड रीजन, to avoid conflicts between legislature and executive. Write down. India as a newly independent country needed to focus on its socio-economic development and could not afford such conflicts between legislature and executive. Needed to avoid conflicts. ये क्या लिखा था? Needed to focus on their socio-economic development, could not afford such conflicts between legislature and executive. Yes. Next reason. जो भी अब मेरिट था, है ना, मेरिट एक ये भी है. ensure, third point, ensure more representative government. मेरिट में नहीं, वाई इंडिया हैज अडॉप्टेड, उसमें लिखा था ना हमने मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. तो यहाँ पे भी हम चाहते थे कि मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो. क्या लिखा है आपने? हाँ, टू एंश्योर मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, स्पेशली, राइट डाउन, स्पेशली for a diverse country like India. Yes, and last point, familiarity
familiarity familiarity with parliamentary form of government. We were familiar with parliamentary form of government. Yes, है ना? तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया थ्रू इट्स वेरियस रेगुलेटिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, है ना, इनफैक्ट 1909 में एक वो मॉन्टी मॉर्ली रिफॉर्म्स लेकर, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स लेकर आए थे. यस, एंड है ना, दे थ्रू इट दे हैड introduced this idea of parliamentary form of government in India. Yes, and later on the 1935 Government of India Act was also on the same lines, and Indian Constitution has adopted its structure from Government of India Act 1935. तो वही लिखो लिखो, आपने लिखा है familiarity with parliamentary form of government. Write down British India through Morley-Minto reforms, through Morley, M-O-R-L-E-Y, M-O-R-L-E-Y, Morley hyphen Minto, M-I-N-T-O, Morley-Minto reforms introduced idea of parliamentary form of government in 1909. In 1909, this reform was introduced in 1909. Full stop. Also Government of India Act 1935 was in line Government of India Act 1935 was also in line with parliamentary form of government. Yes, so because of all these reasons, why should we abandon what we know and go for something very new? When anyways we were a very illiterate nation. For us to understand other systems would become difficult. With difficulty we had understood this. Now for common people to understand another form of government would be difficult. So हमारा familiarity था with the parliamentary form of government. Also it had certain merits which India in fact wanted to sustain. Yes, so therefore we continued with parliamentary form of government. Fine. This is about the feature, another feature of Indian Constitution, that was parliamentary form of government. Next feature of the Indian Constitution is the federal structure, federal system with unitary bias. Federal system with unitary bias. Yes. In fact, when we talk about federal system, yes, there are two types of systems, two types of government. Once again, let's mention two types of system. One is the federal system, the other is the unitary system. Federal system में क्या है? There is distribution या division, है ना, distribution of power between center and state.
and the source of power to both center and state is the constitution. Yes, in case of unitary system, we do not see clear-cut distribution of power. It is the central government which gives certain amount of powers to the local government. Yes, तो यहाँ पे the source of power for the state या local government is the central government. Yes, so it is the central government which will give some power to the local government या to the states. And what is the reason? Reason is administrative convenience. Because can the central government adequately govern the needs, meet the needs at village level and at a smaller district level, and a central government a diverse country के and a diverse region के needs नहीं meet कर सकता. So for purpose of administrative convenience, yes, they give away some of their powers to the local governments, and at any time they can take back these powers as well. These powers are given only for sake of administrative convenience. There is no constitutional need, no constitutional commitment forced on them to give away these powers to the local government or state level government. Yes, but in case of federal system, the constitution provides for a division of power between center and state. This is the idea, and India is a federal system. Indian constitution I have mentioned, schedule 7. Yes, it divides power between center state and center and state. Center and state concurrent list, जहाँ पे दोनों legislate कर सकते हैं, दोनों executive action ले सकते हैं. यहाँ पे state list only subjects on which state can enact law and state can generally execute, and state list only those subjects only on which the state center can enact laws. Fine, not the state. Fine. So that is the idea. We are a federation because we find that there is federal distribution of power based on the Constitution of India. Fine. We'll just understand this much for today. Next class we'll discuss the essential features of a federation. Fine. Write down. Write down. There are two systems of government. There are two systems of government. Put a hyphen. Point number 1, federal form of government. Federal form of government. And second is unitary form of government. Yes. है ना, इसी में लिखो under federal form of government, the source of power for both center and the state level government is the constitution. Yes,
And under unitary form, write down the source of power, the source of power for the local or regional government, local or regional government is the central government. Full stop. It shares its powers, it shares its powers with local government for the sake of administrative convenience, for the sake of administrative convenience and can easily take back the powers and can easily take back the powers that it has given to the local governments. It can easily take back the powers it has given to the local governments. Yes. और example of unitary form of government क्या है? UK. Example is UK. And federal form of government का example India or US. India and US. Fine. Fine. So this is it for today's class. I hope you all have understood. I hope there is clarity with respect to all the topics that we have discussed till now. Yes, and we'll continue further. इस क्लास का जो salient feature का source है ना, to an extent just refer to लक्ष्मीकांत, है ना, वो जो लक्ष्मीकांत का chapter है एक salient features of Indian Constitution, you can refer to that. Yes, not beyond it, उससे ज़्यादा मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको. उसके beyond जो भी है, understand what I have discussed in the class. Further we'll carry forward. Fine. अब जितने भी फीचर्स है जो हम पढ़ा रहे हैं वो डिस्कस कर ले पढ़ लेना है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल वहीं से नहीं कर रही है ना. अक्रॉस द डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू हैव we'll discuss, है ना, हम कवर कर लेंगे. यस. एजुकेशन और लिटरेसी में क्या फर्क है? लिटरेसी इज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, है ना, बेसिक है ना, आप अपना नाम लिख सको और साइन कर सको, दैट मीन्स यू आर अ लिटरेट, है ना. बट फॉर यू बीइंग एजुकेटेड यू नीड टू हैव, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ बेसिक एबिलिटी टू राइट, है ना, ये आपने कुछ पढ़ा होना चाहिए. यू कैन रीड बुक्स एंड यू आर एबल टू डेसिफर एंड अंडरस्टैंड दोज. Yes, so that is education. We have educational degrees. ठीक है. Fine. Fine then. Thank you.